first one, and I'll probably just speak for an hour. How much time, Anjali ji, do I have? 1 hour, I think. 1 hour. Then after that we can take the questions. Perfect. So Yeah. I can speak for 1 hour. Yeah. Yes. Right. So as I said, जैसे ही हमने लर्निंग आउटकम्स के आधार पर बातचीत करनी शुरू कर दी, वहीं से हमारा दो चीजें आती हैं. एक तो लर्निंग आउटकम्स के आधार पर पूरा करिकुलम चेंज होना, कोर्स चेंज होना, लेकिन इसके साथ जो बहुत मेजर चेंज आता है वो आता है आपका असेसमेंट से. यहीं से आपके असेसमेंट का नजरिया, असेसमेंट करने का एक पर्सपेक्टिव, it will change, because we are trying to look at learning outcomes as the baseline for assessment. Now let's talk about what do we mean and how we should be preparing ourselves in light of LOCF and in light of these learning outcomes. How will assessment? मैं curriculum को नहीं touch कर रही, because curriculum is not in today's talk. I'm only going to talk about assessment. We are all familiar that assessment को लेकर बहुत डर रहता है. We are all familiar that assessment is our scope of or our learning of assessment is too limited. It tends to get into the routine process of giving marks. It tends to, end up by doing a feedback maybe, but that also gets limited. And we are all familiar with the terms like assessment of learning, assessment for learning, and of course now the recent term called assessment as learning. I'm assuming that we are familiar with these three terms. So I'm not going to explain these three terms, that assessment of learning, for learning, or as learning में क्या फर्क है. Since we're all teacher educators, so I'm assuming कि हमें ये फर्क तो मालूम ही होगा. लेकिन इनके साथ अब जो जुड़ के आपको नया वर्ड मिला है NEP में, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हमें मालूम है, उसको भी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ जोड़ देते हैं. मैं अब एक टर्म और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है अडैप्टिव असेसमेंट. इफ यू लुक एट NEP, you will find this term adaptive assessment. So by the time I'm talking about learning outcomes, I want you to write a quick line about what you understand by the term adaptive assessment. I'll open the chat box for a while and ask you to write. Let us first think about learning outcomes. So by defining learning outcomes, what have we gained? After we gave learning outcomes to all the programs, to all the papers, it gave us a framework on which our expected learning and assessment is going to be. So when my student finishes a particular course or a content, we only ensure that these attributes of learning outcomes have been met. And I sincerely urge you to look at the UGC document of learning outcomes LOCF of 2019, which is very comprehensive, and it talks about many layers of defining learning outcomes. It talks about learning outcomes in terms of graduate attributes. It talks about learning outcomes in terms of personality attributes. It talks about learning outcomes in terms of vocational attributes. It talks about learning outcomes in terms of academic attributes, and so on and so forth. So you can see that, learning outcomes has been written in such a way that you get familiar to the overall structure of the curriculum. You get familiar, you know what the thresholds are. Of course, learning outcome के साथ अब assessment को हम कैसे जोड़ेंगे? That's the point. Our assessments are going to be very democratic, very open, very student friendly. This term we have been using for quite a while now, but I'm not sure how much we understand this line. But the assessment will have to be taken up in such a manner that we can at least know whether these learning outcomes have been met or not. That's how this entire structure is going to change. So to understand this more deeply, let me do first a very small exercise.
can we just open the chat box and talk about the difference between learning outcomes and learning objectives? Once we know that, then it becomes easier for us to talk about assessment also. Then assessment linking to learning objectives and learning outcomes. Please do not Google. Just write, because if you Google, I can Google it as well. Just your first thought on learning outcomes and learning objectives. Because, unless we get familiarized to these two terms, everything else will not make any sense. So I think we can take this in the chat box. Your reactions or your understanding of these two phrases, learning outcomes and learning objectives. So I'll put myself on mute for a minute so that we can invite some responses. Somebody has already said, Dr. Shilpi Jha, learning outcomes are the purpose for the course is designed to learn. One or two more maybe, because we've started receiving, I think people are typing, so it takes time. Okay, I'll take the responses that I've got. Objective is before starting of the program, outcome is at the end of the program. Okay, more or less. Meenakshi ji said learning objectives are teacher centered, outcomes are measurable and student centered. Okay. Outcomes are the benchmarks and are student centric, and objectives are teach. So I think, I don't know, yeah, more or less you are very near to that, but outcomes are more holistic, objectives are very tangible. So objectives could be just for a session, just for a class. Before starting any course, we prepare objectives to achieve it, and achieve it are known as learning objectives. Yeah. So objectives are, so outcomes give you a wider perspective. Objectives are very specific, and they are quite defined on tasks that we use. They are instructional based, these are very session based, these are very tangible things that we achieve. इसका मतलब outcomes have a broader perspective. और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आउटकम के आधार पर अगर आपने असेसमेंट करना है, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी असेसमेंट जो है, मेरी क्लास की मेरी असेसमेंट ना होकर, आपकी क्लास की आपकी असेसमेंट ना होकर, this is going to be a very holistic framework that we are going to propose, or that is going to come up in terms of assessment. Definitely assessment का वो स्टेज तो फर्क हो ही जाएगा. There will be lot of international tests that we should be ready about. There will be lot of large scale tests. How we take large scale steps is a different story. Whether we can take up what kind of questions can we make up in the large scale test, how we pick this all is also is a matter of fact that we should be prepared for. So defining learning outcomes will help in mobility of students from one institute or one course to another course, both. मतलब आप कोर्स को लेकर दूसरे कोर्स में भी जा सकते हैं, और आप इंस्टीट्यूट के दूसरे किसी और इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं. मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है आपकी यूनिवर्सिटी में आके कोई कोर्स कर सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी का बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में आके हमारे कॉलेजेस में कोर्स कर सकता है, हमारे एक्स कॉलेज का बच्चा वाई कॉलेज में जाके कोर्स कर सकता है. लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमारे आउटकम्स जो है मैच करते हैं. तो हमारे आउटकम्स जब मैच करेंगे, तो इसका मतलब आपने जो डिग्री का प्रोसेस दिया है, जिस बेसिस पे आप उसके क्रेडिट बना रहे हैं, वो आपके आउटकम पे बेस्ड होगा. यानी हमारा और आपका असेसमेंट क्राइटेरिया भी सेम होना चाहिए. वो कैसे होगा? जब हमारे लर्निंग आउटकम्स के पीछे होगा, तो हमारा असेसमेंट का क्राइटेरिया सेम होगा. अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं हायर एजुकेशन पे इतना लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात कर रही हूं. यानी बहुत जल्द हमारी यूनिवर्सिटी को और आपकी यूनिवर्सिटी को कुछ बेंचमार्क्स बनाने पड़ेंगे कॉमन असेसमेंट की. मतलब मैंने अगर कुछ कहीं पर एक डाइल्यूट कर दिया, मैंने किसी चीज को एक्स क्रेडिट दिया और आपकी यूनिवर्सिटी उस प्रोग्राम को एक्स क्रेडिट के बराबर नहीं मानती है, then this child is left in an abyss. That child doesn't know, the student doesn't know where to go, because
according to him, he would have considered, let's say, X credit course from my university, having done assessment in these. And when the assessment is not marked to your university, the criteria for credit will not match, then this mobility of students cannot take place. In other sense, to achieve learning outcomes, our assessment along with the credit aspects have to be matched for all of us, across universities, across higher education. This is amazing. It's going to be huge. All of us will have to, within universities, within institutional, there will be a parity with respect to the courses, credits, as well as assessment. अब आप समझ सकते हैं कि हमारा assessment का criteria, entry का criteria तो होगा ही होगा same, assessment मतलब entry का criteria मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं admissions कर रही हूँ, तो हम लोग को, this is no secret, next year maybe all of us will have to go through CU set, जो हमारा common entrance test हो जाएगा. एंट्रेंस टेस्ट भी हमारा कॉमन होगा, हो सकता है हम लोगों की असेसमेंट्स भी कॉमन होने शुरू हो जाए. अब आप तैयार रहिए कि अगर असेसमेंट कॉमन होगी तो कैसे होगी. बहुत छोटी छोटी बातों पे काम नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर हमें लर्निंग आउटकम के आधार पर असेसमेंट करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा इसमें सोचना, थोड़ा सा इसमें मंथन करने की आवश्यकता है कि हम एनईपी के आधार पर लर्निंग आउटकम्स के बेस के ऊपर असेसमेंट को कैसे समझेंगे. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. Let's now talk about formative oblique adaptive assessment. Formative assessment हम जानते हैं, ये adaptive assessment क्या बला है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं. Again, I want you to think for a while. Google करेंगे, Google तो मैंने बहुत किया adaptive assessment को, मैंने इस term को बहुत ढूंढा. When I got this term in the NEP, I did a lot of Google search and understanding what adaptive assessment is. Let us hear it now from you. If you've not read this term in NEP, I request you to do this. Wherever you will find formative assessment, you will find formative oblique adaptive assessment. So let's have a couple of points on adaptive assessment now. So Dr. Mehek Kaba has responded, saying that it is flexible to suit the learning style of the learner and the requirement of the learning outcome. It basically is use of variety of assessments to enable holistic learning. Adaptive assessment is meant for assessing students as per ability, assessment based on child's caliber. These are not new things that you're saying, you see. Do you understand? Assessment for or formative assessment also talks about child-centeredness, holistic learning, enhancing the capability of the learner, flexibility. थोड़ा और उधेड़ते हैं, थोड़ा और इस थ्रेड को थोड़ा और उधेड़ते हैं, क्योंकि ये मोटी मोटी बातें हम सबको समझ में आती हैं. मुद्दा क्या है? ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मिलेगा आपको, ये सब बातें आपको वहां भी मिलेंगी. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए. Let's go a bit more deeper into this. Catering to individual differences, well, that's already there. If I'm reading it correctly, individual differences are already there. This idea is already, many policies have started saying, we're already there, कि assessment individualized होनी चाहिए, assessment बहुत ही student friendly होनी चाहिए, assessment बहुत ही flexible होनी चाहिए. ये शब्द हमारे पास पिछली पॉलिसी से भी है, लेकिन adaptive assessment नहीं था. ये शब्द formative assessment से भी जुड़ गए थे, लेकिन adaptive assessment नहीं था. Okay. Customized to, ये भी था मैम, वनीता मैम, ये भी था. Customized to students need भी है. Student centric जब हम कहते हैं तो हम यही कहते हैं, customized to student need. आप लोगों ने, yes, Dr. Birmani. Ma'am, can I say something? Please go ahead. Ma'am, adaptive assessment means, for example, like जैसे COVID time पे we all are adaptable to the online mode, more on online mode.
तो इस टाइप के असेसमेंट को हम अडेप्टिव असेसमेंट कह सकते हैं कि हम लोग जैसे जो लोग कंप्यूटर सेवी भी नहीं थे, नाउ दे हैव टू, बिकॉज इसके बिना कोई और रास्ता नहीं था लाइक स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए. सो दिस ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग इज कंसिडर एज अडेप्टिव learning mode, I think so. Yep. You've got the term, you're very close to it. And the example of COVID is very appropriate here. Indeed, as the word itself says, adapt, assessment has to be in an adaptive mode. This draws the premises from the socio-cultural theories of learning and socio-cultural theory of assessment, which primarily talks, और assessment as learning से भी ये थोड़ा सा तालमेल खाता है. अगर आप assessment for learning और assessment as learning के बीच में थोड़ा सा भी differentiate कर पाते हैं और समझ पाते हैं, adaptive assessment, as the term itself goes, it gets adaptive to the level of the learner. Now what happens, the difference between adaptive assessment and formative assessment would go something like this, that I mean, I'm giving a very crude kind of a demarcation, because you know there are a lot of theories and there's a lot of definitions that are there. मोटा मोटा जो हम समझ सकते हैं, that you know, since we will have these bouquet of courses with us, very soon our students will have a bouquet of courses. Every course has a distinct demand, a disciplinary demand. तो असेसमेंट जो मैथ्स का होगी वो अलग होगी, और असेसमेंट जो म्यूजिक में होती है वो अभी भी अलग होती है. असेसमेंट अब हमारी, पहले जैसे हम साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की लेते थे, बच्चा साइंस का स्ट्रीम का, उसकी मोर और लेस असेसमेंट एक जैसी ही होती है, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, मोर और लेस एक जैसी होती है. इसी तरह से अगर आप सोशल साइंस में लेंगे तो आपकी मोर और लेस असेसमेंट का क्राइटेरिया सेम होता है, लॉन्ग आंसर. या ह्यूमैनिटीज में लैंग्वेजेस में लिए तो एक जैसे, मोर और लेस ह्यूमैनिटीज का नेचर असेसमेंट का एक जैसे ही होता है. अब जब हमारा स्टूडेंट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में पड़ेगा, विच ऑफ कोर्स इज अगेन देयर इन NEP until higher education. In fact, you know, if you do a quick search on multidisciplinary in NEP, you will find multidisciplinary term comes 77 times in the national education. Multidisciplinary education, multidisciplinary approach, this comes 77 times. Matlab, from the childhood to adulthood, the student will be doing a multidisciplinary, will getting an exposure to multidisciplinary teaching. मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग हो रही होगी तो मल्टीडिसिप्लिनरी असेसमेंट भी होगी. मल्टीडिसिप्लिनरी असेसमेंट तब होगी जब उसके पास डिफरेंट डिसिप्लिन के वो कोर्सेज को पढ़ेगा. हर कोर्स का पेडागोजी, हर कोर्स की करिकुलम, हर कोर्स की डिसिप्लिनरी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, तो उनकी असेसमेंट टेक्निक्स भी डिफरेंट होंगी. तो इन सब के बीच में उस बच्चे का असेसमेंट के लिए, उस बच्चे के लिए कॉमनैलिटी क्या रह गई, इसको निचोड़ने के लिए हम अडेप्टिव असेसमेंट की बात करेंगे. यानी बच्चे का असेसमेंट जो है, उसकी कोर्स, उसके लेवल, उसकी क्षमता और उसके टोटल पर्सपेक्टिव के ऊपर, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव को अडेप्ट को कॉग्निसेंस में लेकर अमलगमेट करके उसकी असेसमेंट होगी. तो ये ऑफ कोर्स इंडिविजुअलाइज असेसमेंट हम कई सालों से करते आए हैं, हम बोलते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं. अभी भी मुझे नहीं पता कितना, जितना पॉलिसी कह रही है उस हिसाब से, यू नो, lot of these policies go on a very ideation stage. It's very difficult to do it on with a large size classrooms. That's the reality of India. Our classrooms are huge, our classrooms are large. I don't know how much we can think about doing an adaptive assessment, but in spirit, of course, it looks beautiful. In spirit, it looks, in ideological frameworks, in spirit, it looks to be very, very promising. So this assessment is going to take care of all these aspects of the child. So the child adapts, or the assessment procedures will have to adapt themselves to the needs and demands of every child with respect to all these criteria that are associated with one student, including, as I said, you know, the parameters, for example, of course, age to hai, disciplinary aspects, multidisciplinary, mobility, and of course the socio-cultural background. So you take care of all these, and then you talk about the assessment criteria of this student. Of course, this comes very close to assessment as learning.
how do we see this in the practicum? Theory goes somewhere else. How do we see it in the practicum? As I understood, I am not sure whether I understood it rightly or not, because this term even we are exploring, even I'm exploring till date, but it will be a good platform to discuss with my colleagues here, who may also throw light, and we may, think about how we understand this term. If I go wrong, correct me. बट जो मेरी लर्निंग बनी अडेप्टिव असेसमेंट को, वो कुछ ऐसी सी बनी है, दिस इज लाइक माय रिविजन आल्सो विद यू ऑल। मेरी जो समझ बनी है अडेप्टिव से, वो ये है कि बच्चे को खुद पता होगा कि वो क्या करना चाहता है, उसको पता है उसने कौन से कोर्सेज लिए हैं और क्यों लिए हैं। लर्निंग आउटकम से उसको पता है कि मेरा आउटकम क्या है, मुझे मालूम है मेरे पास एंड प्रोडक्ट क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे ये मालूम है कि मैंने एक्स सब्जेक्ट क्यों चुना है, मुझे उससे क्या मिलेगा, मैंने डिग्री कोर्स क्यों चुनी है, सर्टिफिकेट कोर्स क्यों चुना है, या मैंने डिप्लोमा कोर्स क्यों चुना है, मुझे इससे ज्यादा क्या मिलेगा। तो वही बताएगा कि मेरी असेसमेंट का क्राइटेरिया भी क्या है। थियोरेटिकली मुझे ये समझ में आया, आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मैंने पढ़ा ये मेरी समझ का निचोड़ है। आप पढ़िए और मुझे भी बताइए, और हम सब सोचे इसके बारे में कि क्या हम ये सही सोच रहे हैं, और अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग इस टर्म की सही बनी है, देन आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इस थ्योरी से प्रैक्टिस पे कैसे आएंगे। और अगर हम इस मतलब दिस कुड बी अ ब्यूटीफुल एरिया टू कंट्रीब्यूट, आई एम श्योर एनी वन ऑफ अस वी कैन वर्क इन ग्रुप एंड टॉक अबाउट हाउ वी लुक एट दिस इन प्रैक्टिकल बेसिस। प्रैक्टिस पे लाना बहुत मुश्किल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही नहीं अभी हम बात कर पाते ढंग से, तो अडेप्टिव असेसमेंट तो काफी दूर की बात होगी। लेकिन अगर वैसे कह रहे हैं तो दिस इज एन एरिया ऑफ रिसर्च दैट वी ऑल हैव टू मस्ट concentrate upon. So that was the second thing that I wanted to talk about. Everything, of course, is linking to the learning outcomes approach and to our multidisciplinary approach. Then couple of things which NEP talks about with respect. Now this, of course, जिसने भी NEP पढ़ा है उसको पता होगा, बहुत सारी नई टर्म्स हैं, बहुत सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें बात हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट। परख एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है जिसमें लार्ज स्केल टेस्टिंग की बात हो रही है। बच्चों की असेसमेंट हो सकता है हर जो इंटरमीडिएट स्टेज है, जैसे वो कह रहे हैं 5+3+3+4, तो 5 जो इनिशियल 5 है, उसके बाद 3, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, वहां पर लार्ज स्केलिंग टेस्टिंग की बात हो रही है। समथिंग फेमिलियर टू बोर्ड एग्जाम्स, इसके बारे में बहुत बात हो रही है। और एनटीए ऑफ कोर्स तो है ही, एनटीए का रोल बढ़ाने की बात हो रही है। हर जगह एंट्रेंस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। अभी तक जैसे हमारा, आप सबको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी लेते थे, नेक्स्ट ईयर से शायद नहीं ले पाएंगे, शायद हमें पूरा एंट्रेंस बेस्ड पे जाना पड़ेगा। एंट्रेंस बेस्ड असेसमेंट के साथ एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है एनईपी के अंदर, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बात हो रही है। इनफैक्ट दे इवन टॉक अबाउट एस्टैब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक NETF, which will take care of the education as well as assessment in terms of technology. Lot of platforms have been launched, and COVID was I would not say a good phase, but COVID taught us to many assessment platforms, many online platforms, many platforms which can help us do assessment. We moved on to open book immediately. We had to move on an open book test. These are not something new, but these are being redefined and presented again in NEP as a package. But the way we are working forward and the way we have embraced technology, very soon we'll have to think about how we talk about assessment beyond teaching also. So for example, when Delhi University we started working on, we had to immediately come to an open book test. I have no shame in saying that people or educators or even higher education teachers were not or still not are familiar with this phase of doing an open book test. Open book में क्वेश्चन कैसे बनना है ये इतना आसान नहीं है। शायद वो फिर नॉलेज बेस्ड ही चले गए और फिर हमने कह दिया अरे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। आई हैड अ वेरी गुड एपिसोड 2 weeks back. One of my friends called and he said, my daughter, उसके पास ना वो ओपन बुक एग्जाम था और उसके पास आ गया UFM का उसका केस बन गया। I said, what is UFM? I was not even familiar with this term. With this acronym, always these acronyms come up. He said, UFM is cheating का, unfair means.
I was totally amazed. And then I happened to meet my examination department. I said, एक तरफ जब आप open book की बात कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं unfair means, तो ये आपने सर्टिफाई कैसे किया कि unfair means है जब आपने open ही कह दिया है? तो ये थोड़ा ना मुझे पैराडॉक्सल लग रहा है. मेरी समझ में नहीं आया कि आपने अनफेयर मीन्स अब क्या, जब है ही सब कुछ ओपन, फिर उसमें चीटिंग कहाँ से आ गई? वो तो है ही चीटिंग करने के लिए, किताब खोलने का ही टेस्ट है. वो तो है ही कि आप कुछ भी सोर्स से उठा लीजिए. एंड यू वुड बी सरप्राइज, दिस इज वेरी टेक्निकल, नथिंग एजुकेटिव इन दिस. सर मैडम हम अनफेयर मीन्स ना वहां से निकालते हैं कि बच्चे ने कोई प्लेजरिज्म तो नहीं कर लिया, कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया. मैंने कहा मतलब अगर वो खोल कर रीफ्रेश करके टेस्ट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से टेक्स्ट कॉपी नहीं होना चाहिए. तो इट्स सो मैकेनिकल that you only do, you put these phases into a system and it just sees the word matching. वो हमारी PhD thesis में भी यही हो रहा है, जितनी भी thesis submit होती है, it's just a word matching. Intent must have got changed or not, we are not concerned about that. We only go by the word count, by the matching of word count. It is so technical. And that then becomes a part of cheating. How was that cheating? I mean, I did not understand. In fact, I tell my students कि अगर तुमने कॉपी पेस्ट करना है तो मुझे सोर्स बता दो, मैं ही पढ़ लूंगी, मैं बार बार क्यों उस चीज को पढूं? That's the crux of the system. We are not prepared to make good open book questions. Questions which can help children, which can help people to do some critical thinking, to create answers which are reflective, which are open to interpretation, which invite critical aspects, which are open to give varied answers. That I think we'll have to think about now, because assessment is going to be in a blended mode. Assessment is going to be taken also in many aspects. We are familiar with many online tools and techniques like e-rubrics, e-portfolios, e-learners profile. There are many EEEs, but they are so technically built up. And yet every time, even if you look at this year or until now, जितने भी लार्ज स्केल टेस्ट हुए जो इंजीनियरिंग के हुए, दो वर्ड्स बहुत समझ में आने लग पड़े. एक तो प्रॉक्टर्ड टेस्ट की भाषा शुरू हो गई और एक आ गया ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर हम किस तरह से चीटिंग को पकड़ते हैं. मतलब हमारा सारा जो ध्यान है वो क्वेश्चन बनाने पे नहीं है, वो असेसमेंट पे नहीं है, सिर्फ चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए. Isn't this the paradox of assessment? You won't have to think about cheating if the assessment is done in such a way that it doesn't matter. So why are we concerned about cheating, and we only try to minimize or control it everywhere? School test हो रहा, class test हो रहा, टीचर घूम रही होगी, सिर्फ ये कि तू चीट ना कर ले, तू किसी और का आंसर मत देख ले, तेरा अपना होना चाहिए. लेकिन ये जो सारा जो हम कहते हैं वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, वो फ्लेक्सिबल हो, वो टीचर के माध्यम से ना हो, वो बच्चों की कस्टमाइज नीड्स से हो, तो ये सब बातें तो फिर सब लुप्त हो गई. इन सब के बारे में बात करना फिर बेकार की बात है, क्योंकि हमारा तो सिर्फ आइडिया ये है कि चीटिंग ना कर ले. तो जब तक हम इस माइंडसेट पे रहेंगे कि चीटिंग को हमें कर्व करना है, तब तक असेसमेंट में सुधार नहीं आ सकता. तब तक हमारी असेसमेंट सिर्फ वही रहेगी, फियर के माध्यम पे ही रहेगी, उसी पे सेंटर्ड रहेगी कि हम फियर और फेलियर पे ही रहेगी, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ही बस ये है कि वो टू पास हो तो अपने उस पे पास हो, चीटिंग से ना पास हो जाए. और जब तक वो चीटिंग का मुद्दा रहेगा तो बच्चे भी वैसे ही पढ़ते रहेंगे, शैतानियां भी होती रहेंगी और आइडियाज भी वैसे ही चलते रहेंगे. तो हमें अपनी सोच को, अपने क्वेश्चंस को, अपने असेसमेंट की टेक्निक्स को इस तरह से चेंज करना है ताकि इस फियर पे हम काम ही ना करें. मुझे आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है बताने की कितने टेक्निक्स होते हैं असेसमेंट के. मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है. पोर्टफोलियो होता है, प्रोफाइल होता है, रूब्रिक होता है, हमें सबको ये बहुत अच्छी तरह से पता है, बट थ्योरी में पता है. प्रैक्टिकली आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमें नहीं मालूम है. शायद हम भी अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली नहीं यूज करते हैं. आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज अ वेरी कॉमन ट्रेंड कि रूब्रिक्स कैसे बनाने. मतलब we always say that our observations tell us about assessment कैसे होनी है, हमारे बच्चे कितना सीख पाए हैं, ये सब हम किताब में जरूर बताते हैं, लेकिन हम अपने एडल्ट स्टूडेंट्स के साथ कितना इसको यूज करते हैं, that's a learning for us. I have done this, I've tried to do this with my own students, and then I realized the agony of a teacher. When I did it for my class of 50 students, just for 1 year,
I realized that what would be the agonies of a teacher who does this every time, every year, with a large base classroom. So all of us here are teacher educators. I really request you to please consider, whenever you're teaching your students, there are two aspects that you have to consider. One is the diversity of a classroom. The second, sorry, three aspects. One is diversity of the classroom. Second is the techniques that are available to us. And third is, can these techniques that we teach, are they practically useful in our classrooms? Let's not take it from something which is coming to us from, the international perspective. Their social structures, their milieux, their classroom sizes are very small. Our classroom sizes are big and huge. 90 बच्चे की क्लासरूम के अंदर क्या एक टीचर पोर्टफोलियो बना सकती है? क्रेजी, मैं ही नहीं बना सकती. अगर मुझे 90 बच्चे दे दिए जाएं तो मैं हर बच्चे के 90 बच्चे का पोर्टफोलियो बनाऊं, रिमार्क्स लिखूं, प्रोफाइल बनाऊं. I'll go crazy. There'll be some other mental hospital where I'll be landing up. Let's get practical. This year, last 2 years, I've been doing, which got disturbed. I've been doing pedagogies that are taking place in large size classrooms. That was an eye opener for me. Even though our CBSE or the gadgets tell us that our student-teacher ratio should be this, 35:1 or whatever numbers, 28:1. None of our classrooms are of this size. क्या private और क्या public और क्या government. कोई भी classroom इस size का होता ही नहीं है जो हमारा threshold है. और हम बातें करते हैं कि हम इसके अंदर child centered की बात करेंगे. उस teacher के नजरिए से सोचिए, इन सब का amalgamation देखिए. इतनी eye opening मेरे पास findings आई थी कि इतनी बड़ी बड़ी क्लास में जब 90 बच्चे बैठे हुए हैं, वो टीचर पढ़ा रही है, इफेक्टिवली भी पढ़ा रही है, और कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे हो सकता है उसके अंदर, बिहेवियरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पढ़ा ले, कोर्स खत्म करा ले, जिसको हम बार बार कहते हैं वो कोर्स खत्म करा ले. वो 90 बच्चों के लड़कों की क्लास के अंदर और मिडिल स्कूल बॉयज के अंदर अगर उसने कोर्स खत्म करा लिए तो सैल्यूट है उस टीचर को सच में. तो उसमें असेसमेंट कैसे वो ला सकती है? All these innovations that we talk about assessment, how do we bring that up? What kind of assessment do we, what are the techniques that is going to help these students and these teachers in accomplishing all these tasks? I think this is something very important that we have to look forward to. So I now invite, this is what I had to say. I didn't want to give you any gyan or anything that, that is quite textbookish, because we have many books on assessment for learning, of learning, assessment in education, which we are very familiar with. I just wanted to chit chat with you and share certain things that I have gathered through my experience, on which we need to work collectively, on which we need to think about it in a very practical approach. NEP भी आप पढ़ लेंगे, इसलिए मैं कोई बुकिश बात नहीं करना चाहती, कोई टेक्स्ट बुक बात नहीं करना चाह रही थी अपनी स्टॉक में. Because I know we're all friends, we're all colleagues. I'm not a person to tell you the theoretical aspects we have, but we need to think critically about assessment. We need to reflect on assessment in a practical approach and not in a bookish manner. It's time we sit together, we talk about these issues, we discuss about these issues, and only then we'll be able to contribute and understand about what is going to come up in the next 10 years and how we prepare and embrace ourselves for all these changes. So that's what I wanted to talk or say. I'm sorry I couldn't run my PowerPoint. There could be some points that were there, but I would have missed them. I'll send my PowerPoint for all of you to see. But in the quick way that I could gather from my PowerPoint and pen it down here, I think these are the points that I wanted to share. We can talk and discuss now. So the platform is open from my side. So thank you, Professor Haneet, for covering all the points related with the topic, which was on which you are supposed to talk. I think you have covered all the topics. And thank you for making your you can say your
your ideas with all the participants. Sometimes it becomes so difficult to switch over from PPT to the like face-to-face mode, because generally even I also write some points in the PPT so that everything, whatever I want to say, I should speak, and in between I should not forget that. So I think you have done a great justice in doing that. And now I think the session is open for the questions. If you are having any questions, so you can ask. Dear participants, if you are having some doubts, you want to ask, you want to interact on some topic, so you can ask now. Okay, I think Professor Haneet, you have made your presentation so interactive that all the participants were very active during the session, and they have written their comments, their understanding in the chat box. So thank you. And now I would like to formally give you the vote of thanks for having such a wonderful lecture, and we are highly obliged with your presence in the session. And I remember that a few days, I think 2 days before, Professor Harjeet Kaur Bhatia has said something in the session that technology बहुत अच्छी चीज है, लेकिन sometimes it do not work in all the circumstances. So today I think we have learned that yes, that was very true. Sometimes we failed in front of the technology. So, but it's good that you also and the technical team shifted the WebEx software to the Google Meet. So special thanks to, I want to give the special thanks to the technical team and to you also, Professor Haneet. And you rightly said that in your session, you rightly talked about the difference between the learning objectives, which are lesson based, and the outcome, which is you can say the holistic way. And a lot of new terms like the large scale test, the board exams, entrance test assessment, ICT, technology, new platforms which are being launched, new style of assessment, that is open book test. You have also covered the assessment things which are related to the in-service training, and that is required for the teachers so that they could be aware of the new modes. So that was really appreciable. And you also talked about, you have suggested that we all have we have to change our techniques of assessment also, then only we can flourish. So I do agree with your these points. And now, especially, I want to thank you for making the session so interactive. All the participants were giving the comments on the chat box. The session was really lively, very engaging, very educative, and moreover, it was very fulfilling lecture. And I think all the participants they certainly benefited from the breadth of your knowledge, your depth of expertise. We are really grateful. Thank you so much, Professor Haneet, for having this wonderful session and accepting our invitation. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Anjali ji, for calling me, having me here. And of course, a big thanks to the technical team and the participants who switched over between the platform. Thank you so much. Thank you. And I again want to thank Dr. Shweta. I think she messaged on the chat box that can we switch from WebEx to Google Meet. So I think the first idea was from the Dr. Shweta. Then only we have switched the mode of, you can say, the changing of software. So thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you. And dear participants, again, we will meet at 3:30 for the next session. And Dr. Gaurav will be the speaker in that session.
And I think we all will join with the same link, which was which we are having in the morning. So now we are ending the session. Again, meet at 3:30. Ma'am, please join on WebEx. Everyone, please join on WebEx. We will Yes. be starting our next session on WebEx. Thank you very much. So now I think we can see some faces. In between, we have seen Dr. Akash Ranjan, we have seen Sakshi Virmani. Thank you. At least in this Google Meet, we can see each other. Yes, my pleasure, Dr. Shweta. You have written, thank you, Anjali. Okay, so now we are in